Waiting for Yogesh, guys. We'll start. Okay, so it says we strongly recommend creating a new storage account and selecting it here, restoring premium VM. This list is filtered for storage accounts in the subscription. Choose the above location as vault, non-ZRS active and non-attached to any affiliate group. The account will be used as a temporary location during the restore. Cost optimization, we also filter out the premium storage accounts. So it will only list those accounts which are नॉन ZRS, जो जोनल रिकवरी सर्विस जिन्होंने नहीं यूज कर रखी है. सो मे बी GRS अकाउंट भी यहाँ पर ये होंगे या जो LRS होंगे वो हो गए या नहीं. You guys can check, or if you want we can create few accounts here and check if you guys want to do that. But irrespective of that, irrespective of the method or the nature of that storage account, you can use the feature. Let me explain it how and why. Meanwhile, first we'll quickly check the what is the status of our restore. Okay. Now understand one thing, guys, that this is your storage account, or this is, let's say this is your data. Okay. This is your data, or this is your virtual machine. Here you have GRS. So 3 copies are saved. In backup you have taken, or let's say here you have ZRS, 2 copies are saved. While backing up you have taken GRS, जहां पर 2 अलग region में ये बनेंगे. ठीक है. 1 and 2 different regions. This is same region. This is same region. While backing up, these are 2 different regions. आपका एक्चुअल में था ZRS, जोन रिडंडेंट, आपने ले लिया GRS. इसके आप आगे और आगे जाके आपने ले लिया GAZRS, इस तरह से कुछ ले लिया. इट डजंट मैटर, कुछ भी हो जाए. व्हाट आर दीज एक्चुअली, अल्टीमेटली ये है क्या? एक्चुअल में ये सब बस उसके कॉपीज है. यहाँ पर एक कॉपी बने, यहाँ पर एक कॉपी बने, यहाँ पर एक कॉपी बने, डजंट मैटर किसी भी तरह से हो. बस मल्टीपल कॉपीज हम बना रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास वो डेटा अवेलेबल रहे. While restoring, अगर ऐसे कुछ होता भी, so I am not restoring from all of those. Ultimately restore तो मैं किसी एक ही कॉपी से करने वाला हूँ, राइट? या तो इससे करूंगा, या इससे करूंगा, या इससे, या इससे, किसी एक से. While restoring, जो मैंने टेम्परेरी स्टोरेज बना रखा है, अगर वो टेम्परेरी स्टोरेज ZRS होता भी या GRS होता भी, इट डजंट मैटर. GRS होता तो रिस्टोर और VM बनने के बीच में वो अपने आप की 3 कॉपी बना लेता, 1 2 3, और इसमें से किसी एक कॉपी से वो अपना VM बना लेता और वो अपने आप को डिलीट कर देगा, वो टेम्परेरी है. और अगर नहीं भी होता तो वो एक कॉपी बनाता. आई मीन योर फंक्शनैलिटी इज नॉट चेंजिंग, योर मेथड इज नॉट चेंजिंग, योर डेटा इज नॉट चेंजिंग बिकॉज ऑफ दैट फीचर. इज इट क्लियर, जूही? Oh, yes. I got it now. Yep. फाइल सिस्टम एक डिफरेंट चीज है. क्या आप बोल रहे हो यार मेरे पास लिनक्स का फाइल सिस्टम उसको मैं विंडोज में करना चाहता हूँ? दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके. फाइल सिस्टम एक डिफरेंट चीज है, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, वैसे भी वो ओएस लेवल की ट्रबल शूटिंग है. So this tsoft, it is being restored as a new virtual machine. Once this is done, we will see that. Meanwhile, we will go and check. हाँ, Linux को हम restore कर रहे थे. We will check as a replacement of the machine. You won't even understand, by the way. Let me log into that machine first. But I'm not sure if you guys will understand the Linux system. Do you want me to log into Linux machine, show it to you, restore, and then show it to you? But ultimately, it is going to appear same black and white वही वाला screen. Or will you understand it without showing those portals? Okay, let's go. Let me show it to you. That's up to you whether you get it or not. वैसे भी I have told you restore वाले section में बहुत ज़्यादा आपसे questions नहीं होने वाले. Okay, so first thing what I'll do,
Okay. Fine. We got a classic situation already here. My machine was not turning on. I wasn't able to create a restore machine, guys, right? Because course कम पढ़ रहा था. So what did I do? लिनक्स मशीन को डिलीट कर दिया था. And now I realize कि यार वो Linux machine तो काम की थी. ठीक है. Now I want to restore the machine. So this is a classic example. The only thing is that we will not be able to restore the machine because there is no machine to restore. इस केस में हमको न्यू मशीन बनानी पड़ेगी. बट लेट्स सी, विल सी इट नाउ कि फिर से हमको एग्जैक्टली वही लिनक्स मशीन कैसे मिलेगी. दो यू गाइस डिड नॉट सी इट कि पहले उस लिनक्स मशीन में क्या था, बट स्टिल यू विल बी एबल टू सी दैट हाउ कैन वी रिकवर. वो मशीन अभी पूरी तरह से जा चुकी है. सो व्हाट कैन बी डन इन दोस सिनेरियोस. So I'll go to the backup items. You can see 3 machines are being backed up. Linux is there. I'll restore this machine, restore VM. While restoring, I'll select the latest point because in this case my machine has been deleted. So I want maximum things. अगर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, restore हो जाएगा. But anything which was saved beyond this date, 21st August 12:32 PM, इसके आगे की सारी चीजें restore नहीं होगी. It will be deleted. So I have a better option कि मैं यहाँ पर एक 21st August मतलब कल रात का 10:30, इसके आगे से आज तक सुबह जो डेटा ये हुआ होगा डिलीशन के बीच में, डिलीशन और इस टाइम के बीच में वो चला जाएगा, वो नहीं मिल रहा है आपको. I click OK. I can restore a disk or restore a VM or create a new VM. Okay. So why do you think यहाँ पर restore VM का ऑप्शन नहीं मिल रहा है? Create a new virtual machine or restore disk, इतना ही मिल रहा है. Why not replace the machine? क्योंकि ऊपर हमने क्रिएट न्यू किया हुआ है. This option, right? So if you want to restore, but will we are we able to use? Can we use it? Replace वाला काम में आएगा क्या हमारे? नो नहीं आने बिकॉज वाला है मशीन because इज हाँ डिलीटेड. मशीन हमारी नहीं है वहां पर, right? So you have to make राइट. sure here you select correct option. If you're creating a new machine, you'll have to select it from here. When you do a replacement, और इससे ये एक और चीज है that your uh, restore vault, it doesn't know कि आपकी मशीन है या नहीं, वो एरर आपको बाद में आएगा. So you have to make sure that you select the correct option here. I can do a replace here और यहाँ पर जाके हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, but it is not going to work. So restore, create a new machine हमने already कर लिया. So this time we will try to restore the disk only. सिर्फ disk को ये करके देखेंगे हम लोग. But there is again one issue should be there. It could be there because we do not have storage account, temporary storage account है नहीं. I do not want to use this one. इसमें दूसरी चीजें रखी है मैंने. So let's create a storage account first. Or we'll see if this has been completed. Okay, this has been completed. Let's work on this machine first. We'll come to Linux later. Because वैसे भी एक मशीन मुझको डिलीट करनी ही पड़ेगी. कोर हमारे पास कम है. लिनक्स का कोर हमने डिलीट तो कर दिया, बट उसके बदले हमने ये मशीन बना ली, राइट? So here we got the error while I was creating. If you see, 2 machines have been restored. So let's see if this has been done. What username and ID will I use here? User ID and password. Do I have to create new one or how does it work? Can I create new one? Will I have to restore? What are the username and password I'll use, guys? द सेम यूजर एंड पासवर्ड. Exactly, because you're restoring the machine. पूरा Windows के scratch से लेके हर एक फाइल जो है आपकी restore हो चुकी है. So this is the machine I have, guys. इस मशीन में कॉन्फ़िगरेशन से लेके हर चीज whatever file I had सब कुछ आया होगा. In fact, I host a website on this machine. मतलब इतने डिटेल में बैकअप होता है. I host a website on this machine, not on this machine. When I say this machine, मेरा मतलब है इस मशीन पे मैं एक वेबसाइट होस्ट करता हूँ, ठीक है. वो वेबसाइट भी पूरी की पूरी तरह कॉपी हुई होगी.
If you want, please go to your browser and type this IP address 20.127.141.99, this IP address, one which you see here. Type this and you should be able to see that website of mine, which was there in this machine, this one, because ये इसका exact backup है, इसलिए you are able to see everything here. Check if you are able to see this website. I won't even touch, I won't even do anything here now. I'm not going to configure a new Yes. website. ठीक है, so this is the level of restore. Let's say कि मेरे वेबसाइट में कुछ इशू था कल, मैंने कोई अपडेट वगैरह किया और वो अपडेट इतना बड़ा ब्लंडर हुआ कि वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, बहुत सारा नुकसान हो रहा है, सो आई कैन गो बैक टू माय प्रीवियस वर्जन. इसलिए बैकअप जो है बहुत क्रूशियल है. इज इट क्लियर गाइस? सो दिस इज हाउ वी रीस्टोर by creating a new virtual machine. We created a virtual machine from scratch. Okay, so I'll just delete this, so we will be able to create a new virtual machine now. Anyone has any doubt before I delete, before I move anything from here? Srishti, Yogesh, Akib? No, I have to No, actually practice to understand this better. Yes, please. All of you will have to practice. Keep practicing. उसमें कोई doubt नहीं है. Okay. Now one thing, you will say कि यार restore, replace जब करोगे ना, let's say we'll do a replace also. एक replace भी करके देख ही लेते हैं. Let me delete this. And meanwhile, I'll show you that storage account जहाँ पे हमारा temporary file जो ये था, इसमें save था temporary file. ठीक है? What happens with this? This is the storage. By the way, guys, where do we see ये सब जो है आपका अकाउंट वर्चुअल मशीन का जो डेटा है वो कहाँ स्टोरेज के कौन से इसमें सेव होता है? डिस्क जो है, इज इट इन टेबल्स, क्यूज, फाइल शेयर, कंटेनर? इफ कंटेनर, वेयर इन कंटेनर? किस तरह के ब्लॉब्स होते हैं? We did discuss this. I remember it very well. Make sure you keep reading to old topics as well. And if you realize, my temporary storage account was in Arbaz resource group, machine was in Chand resource group. So that is possible as far as they are in same region. Yes, guys. स्टोरेज अकाउंट का कौन सा वाला ब्लॉब या कौन सा वाला हिस्सा है वेयर आई विल फाइंड माय हार्ड डिस्क? एक न्यू वर्चुअल मशीन बनाता हूं तो वो स्टोरेज, वो हार्ड डिस्क स्टोरेज के कौन से इसमें जाती है? वी डिस्कस दिस ऑलरेडी. डिस्कस्ड अबाउट फाइल्स, क्यू स्टोरेज, कंटेनर्स, राइट? इन कंटेनर्स वी डिस्कस्ड ब्लॉब्स. ब्लॉब्स के कौन से टाइप है, किस तरह की फाइल्स आती है. देयर आर, प्लीज मेक श्योर you read this. ब्लॉब स्टोरेज, ब्लॉब में क्या आता है? ब्लॉब आता है, अपेंड ब्लॉब आता है. Here I showed you once कि आपकी हार्ड डिस्क जो है कौन से वाले इसमें जाती है, कौन से स्टोरेज में जाती है. Anyone remembers still? The answer is already there वैसे. Yes guys, you still won't get it? Fine. Today please make Even sure to read it thoroughly. यहाँ से यहाँ तक आपको वैसे ही आंसर मिल जाएगा. यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ लो ना, वैसे सामने ही आंसर. If you see, let it be. Page blob is the part of container where all of our disks are saved. Managed disks are saved. ब्लॉब में क्या होता है? टेक्स्ट होता है, बाइनरी डेटा होता है, फाइल्स होता है, ये सब होता है. अपेंड ब्लॉब में क्या होगा? अपेंड ब्लॉब में लॉग टाइप की फाइल होगी जिसका एक एंड पे शुरू होती है और उसी एंड से दूसरी चीज शुरू होगी.
वो है append blob. Then there is one page blob. Page blob में हमारी सारी hard disk जो होती है वो page blob में होती है. Sorry, someone was saying something. जो है सृष्टि. I'm just saying that V1 storage. Yes, that is your storage का type. By the way, V1 में भी नहीं होता, V2 में रखते हैं हम लोग ज्यादा यहाँ पर, but yes, V1 में भी जा सकता है disk if you see. But V1 we never ever use. V1 बहुत costly भी है, legacy भी है, old भी है, resources भी कम है, redundancy options भी कम है. V1 किसी भी तरह से जो है best नहीं है. See, V2 supports blob, V1 supports blob. V2 support file, queue, table, disk, fine. But V2 data lake generation 2. V1 support LRS, GRS, RAGRS. V2 support LRS, GRS, RAGRS, ZRS, GZRS, RAGZRS. So general purpose V2, it's always recommended, and that is the mostly used account we have. Then why do we have V1? V1 we have only for those applications which are legacy application. मतलब बहुत पुराने application है जो V2 को पे support नहीं करेंगे, but client wants to move them to cloud. तब हम V1 को introduce करते हैं. बस एक as an optional रखा है, थोड़ी देर में उसको निकाल देंगे वो लोग. Clear? Yeah. So that is done now. Okay, it has been deleted. Again, go back to our recovery service vault. Backed up items I can see here. Tomorrow we might start site recovery. खैर vault वगैरह समझ में आने के बाद site recovery थोड़ा easy होगा आप लोगों के लिए, but let's see how it goes. This one, and now I want to replace one machine, so I'll replace this one. क्योंकि Linux तो हमारे पास है नहीं replace के लिए. This one I do not want to replace because थोड़ा सा भी glitch हो गया तो मेरी मशीन चली जाएगी जिसमें मैं काफी काम करता हूँ. ठीक है, so this one we will replace. If you want, I can restart it. I can start this machine and let's see how it looks. इसमें अभी क्या है और restore करने के बाद क्या. Okay, we will do this practical. You will get a better idea. I'll start the machine. And because I stopped them together, all of them, I left the public IP there. But as I told you that this month we have sufficient balance, so we can afford it. But whenever you have multiple machines, make sure you come to each machine and stop. Then it gives you an option that do you want to hold public IP or release it, and you can release it. What did I do? I selected all machines together and I clicked on stopped, and my public IP was there. Even my machine wasn't being used, still I was paying for the public IP. But as I told you that I have already calculated this month, we are not needing this. हमने ज़्यादा practical किए नहीं है. Yes, please practical जिसका बाकी है वो लोग कर लो जब तक ये balance है इतना, right? Once we start site recovery में तो बहुत ज़्यादा ये होता है, because site recovery दो दूर के region में भी हम लोग कर सकते हैं, so it takes time. और data वगैरह बहुत जाता है, पैसे उसमें काफी जल्दी चले जाते हैं. So this is the machine, UT-Kloud V2 VM002. This is the machine. Let's say a user has logged into this machine. ये कोई खास डेटा वगैरह होता नहीं है इस पे, बस हम लोग एक प्रोसेस रन करने के लिए क्लाइंट इज सेइंग दिस कि हमें कोई छोटा सा लोड वर्क करने के लिए, प्रोसेस रन करने के लिए इस मशीन को यूज करते हैं. कोई डेटा वगैरह कोई खास चीज नहीं है. इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे लिए काफी है, बस उतना ही हम लोग यूज करते हैं. Let's say a user is using this and by mistakenly he deletes something. So let's say how to recover that. So I'm not sure if I will be able to delete something from here because इसमें कोई डेटा है ही नहीं और मुझको डिलीट करना होगा इसका C ड्राइव से कुछ तो. Or let's see if I have some data here. Temp log से वो वैसे भी delete होता है. Okay, so Windows Azure. I'll see if I can delete this. No, I can't. Okay. Let's say some user he figured it out, कहीं से उसने hidden folders निकाल लिए
or he deleted something which was very important for the OS. Or maybe one more thing, I'll show it to you guys. Hidden items होते हैं file with extension, and एक और इसमें crucial चीज होती है OS protected files. वैसे normal user कोई यहाँ पर जाके इतना ये करता नहीं है, but let's say for somehow they managed it, और यहाँ से इन्होंने ये कर लिया, protect file को unhide कर लिया. So these are the files which are protected. जो ये दिख रहा है थोड़ा सा faded icon दिख रहा है, मतलब ये deleted थे. So I deleted something. ये भी delete नहीं हो रहा है वैसे. वैसे it's difficult to delete something. जो crucial चीज होती है ना वैसे ही delete नहीं होती है. But let's say somehow कुछ तो delete हो गया and they managed to delete it. देखते हैं इसमें से कुछ delete कर सकता हूँ क्या मैं. Okay, something got deleted I guess. कुछ तो delete हुआ है यहाँ से. I'm trying to delete something जो मैं बाद में restore करूँ तो आपको दिखे भी. यहाँ से कुछ delete हो गया और बाद में restore के बाद दिखेगा भी नहीं. You won't understand that. I'm not sure if I can delete my next section. I guess it is deleting. Are you guys getting it? What are we trying to do? Now we are deleting some crucial file, और इस तरह का crucial file को हम delete कर रहे हैं ना कि उसका तो OS restart करने पे crash ही होने वाला है. So in this case, does it make sense कि मैं कोई दूसरी virtual machine बनाऊं then उसको move करूं? I mean ये virtual machine मेरा वैसे ही कोई काम की नहीं रह गई अब. Okay? So I can replace it. So that is what we are trying to do. First, let's see if we are able to delete this. Yes, guys. Meanwhile, do you have any questions? Yes, guys. Any doubt, anything you have in your mind that what might come to your interview questions? आपका job क्या बताना है? Frequently कौन से task आते हैं? Anything, any random doubt do you have in your mind? And let's say not only related to storage, anything, because just looking at the screen and wasting our time उससे अच्छा है कि हम इसको utilize कर लेते हैं. Any doubt, not only related to this topic, maybe topics which we covered already or topics which we are going to cover. Anyone has any question? Yes, well, Akib here. Yes, Akib bhai, tell me. Yeah, I mean, as I come from the SSM background, okay, so suppose if I mean, put an experience of 3 years with Azure, so what kind of, tasks or questions I would be expecting? जो भी आप अपने resume में लिखोगे, by the way, sorry to interrupt. One thing, guys, VSS folder जो था ना यहाँ पर, VSS मैंने delete कर दिया. I already explained VSS क्या है, कितना important है. इसके बाद जब ये मशीन अगर ऑन भी होती है ना, वैसे तो अभी ऑन नहीं होगी, बहुत सारे फाइल्स मैंने डिलीट किए. अगर ऑन भी होती है तो VSS नहीं होने की वजह से इसका बैकअप कभी भी ऐसे से नहीं रन करने वाला है. तो इधर आई हैव टू रिपेयर दैट बैकअप or I'll have to restore the machine. So VSS I have deleted. Now let's say we'll restart it, we'll restore it, and we will see कि इसमें बैकअप जो है फिर से दिख रहा है क्या. I will also try to delete this software distribution folder. ये भी नहीं रहा, but that's fine. We have deleted VSS. Now I am going back and trying to restore. Answering to your question, Akib bhai, जो resume पे आप लिखोगे ना कि these are my roles and responsibilities for 3 years, majority questions उसी पे आएंगे. So now depends up to you
what do you write on your resume? So I always recommend कि इसी चीजों को लिखो जो हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे इम्प्लीमेंटेशन टीम का हिस्सा बताओ अपने आप को कि आई यूज टू गेट अ लो लेवल डायग्राम, वहां से मैं इम्प्लीमेंट करता था। क्या क्या इम्प्लीमेंट करते थे आप? ईच एंड एवरीथिंग, वीनेट, सबनेट्स, वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज, बैकअप पॉलिसीज। बस बनाते हम नहीं थे, ये बनी बनाई कहीं से आती थी, मतलब एक ऑन पेपर पे सब कुछ आता था डिसाइड वगैरह होकर। वी यूज टू डिप्लॉय दैट। Okay. So I go to backup now. ठीक है, remember guys, I deleted the VSS folder. Now I am going to restore it. This was the machine. I'll check restore VM. I'll take the backup, the latest one. क्योंकि डिलीट जैसा भी 5 मिनट पहले हुआ, लेटेस्ट भी इसका कल रात का है। रिप्लेस एग्जिस्टिंग मशीन। ऑब्वियस है कि मुझको एक स्टोरेज अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। Now what is this going to do guys? The disk selected from restore point will replace the disk your existing machine. तो ये मशीन से मतलब क्या होता है? Let me show it to you कि क्या exactly replace क्या कर रहा है। मतलब उसको पूरा हर चीज रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। I'll show it to you क्या रिप्लेस हो रहा है and hopefully you'll understand that. This is the machine we are planning to restore, right? तो इस मशीन की जो ये डिस्क है ना, ये डिस्क, इसको रिप्लेस कर देगा। That's all. बाकी आपका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वैसे ही पड़ा रहेगा सब कुछ। बस इस डिस्क को रिप्लेस कर देगा इस वाले प्रोसेस में। So I click on restore. So validation has failed. What does it say? Please shut down the VM and then retry. So what did we understand one thing here? हमें वर्चुअल मशीन ऑन नहीं करनी चाहिए थी। Yes. नहीं ऑन करके हमने ये कर लिया while replacing. जब मैं नया बना रहा हूं तब while I'm creating a new machine doesn't matter, right? While I'm creating a new machine it doesn't matter. When I'm replacing, so the original machine has to be in shutdown mode. और मैंने वो कई बार आपको बताया भी कि हम replace करेंगे ही कब? ऐसे सिचुएशन में सी जब तक ये मशीन चल रही है ना, दैट इज फाइन। व्हेन आई रीस्टार्ट इट तो वो रीस्टार्ट होगी नहीं, वो वैसे ही अपने आप शटडाउन मोड में होगी मोस्ट ऑफ द टाइम। बट दिस इज गुड, दिस इज द रीजन आई टेल यू टू प्रैक्टिस। ये छोटी छोटी ऐसी चीज होती है ना कि याद, इवन आई डिड नॉट नो दिस, ऐसा नहीं कि ये आई न्यू दिस एंड आई वांटेड दिस एरर टू कम इन एंड देन आई वांटेड यू गाइस टू लेट यू नो कि ये ऐसा हुआ। नो, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस, आई डिडंट इवन नो। खुद को काफी टाइम और रिस्टोर करे हुए, फिर हम तो वैसे भी करें करते ही नहीं है उसको, एंड यू गाइस विल नॉट डू इट, आप लोग भी नहीं करने वाले हो। सपोर्ट का काम होता है। हेंस यू नीड टू प्रैक्टिस, एटलीस्ट इंटरव्यू तो आप प्रैक्टिस करते रहो। तो इन चीजों को आप खुद इलेबरेट करके, जितना इलेबरेट करके बोलोगे ना, दे विल थिंक कि हाँ आपने काफी अच्छा टाइम जो है काम किया है। सो फॉर क्रिएटिंग अ न्यू मशीन you do not require your original machine to be shut down. For restoring using file recovery, Joey, do you need your machine to be shut down? You did it right today? No. No. So Yeah. when do we need to shut down our machine? When we are replacing it. So I'll try to restore it again. Let's see how it works. While this is happening, guys, do you have any questions? Please do ask. Today we are finishing this topic. Tomorrow we'll start
replication. Yes, guys. Anyone has any questions, please do ask. I can ask a few questions if you do not have any questions. Okay. The trigger has been completed successfully, not restore. Trigger has been completed successfully. Okay. One thing is, last time भी मेरे साथ ऐसे वो 2 बार restore हो गई machine. So I think what we can do here while you are practicing, if any error comes, so come here and check कि वो job already शुरू हो गया है क्या. Let's say कि एक job already शुरू हो गया and then it gets error, machine is not shut down. So you can come here, पहली वाली machine को shut down करो and then refresh it instead of creating a new ये. And here if you see, यहाँ पर दिखता है क्या, वॉल्ट से डेटा जो है ट्रांसफर हो गया है और वर्चुअल मशीन पे अपडेट हो रहा है. सो दिस टास्क वाज वेरी क्विकली. क्यों? क्योंकि हमारा डेटा जो है बहुत छोटा सा था. ठीक है, डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हो. And I am not sure why this is being done. I guess this is new feature. You guys can read it. If you want me to do that, I'll read and let you know. But what I can presume or assume by looking at this, that Azure has released a new feature or something जहाँ पर when I'm replacing a machine, so before replacement, it's always better option to take. Normally हम करते ही manually, इसमें Azure में नहीं था. I think they have they're doing it now. कि कोई भी चीज को मैं replace कर रहा हूँ ना, तो it's always better option, a best policy कि मैं replace करने से पहले जो existing है at least उसका एक copy लेकर रख लूँ. Did you guys get it? I mean, the last backup which I had for this VM was yesterday 10:30 से अब तक जितना डेटा है वो सारा का सारा बिल्कुल भी उसके ऊपर बैकअप नहीं है. दो मशीन ऑन नहीं हो रही है बट डेटा बैकअप नहीं है. And I'm planning to replace this machine with this data. So what Azure is doing, it is capturing a screenshot or a snapshot or a backup इस टाइम का भी before replacement. So later on if you figure it out, किसी तरह से आपने OS को चला लिया, तो at least you will have this data also. या फिर ये replacement अगर नहीं होता किसी तरह से, मतलब आपका करंट स्टेटस आपके पास होना चाहिए. दैट इज द रीजन ये बैकअप ट्रिगर हुआ है. अदरवाइज इसका स्केड्यूल बैकअप जो है मैंने ये लगा रखा है, 10:30 का लगा रखा है. दिस वन. इज इट क्लियर गाइस? Can you please explain it again? दिस वन इज क्लियर राइट? Yeah. Okay. So I initiated a restore for this VM. Restore with a replacement of existing machine. That is clear, right? Yes. Till that you guys are clear. Yeah. Why do you think this backup has occurred? I did not click on backup now. My backup policy says that it should be backed up on 10:30 p.m. every night IST. So why this backup has been started now? I was just restoring. Why this backup? Who started this backup? It is not the one of the schedule things. It is, I didn't do it manually. So why this backup? So I was explaining this. Why this backup? Because my last backup which I have in my vault, the last backup which I have, let's say that is VM001. Last good backup from where I'm restoring is 21st August 10:30 p.m.
IST. This is the best backup I have. Okay, and it's not English word best. Normally they use this terminology best backup as in which can be used for recovery. So best backup एक term use करते हैं. नहीं भी करो आप तो कोई issue नहीं है. Best backup, good backup, जो भी बोला. So this is the backup I have. My machine just got crashed. Machine crash होने का क्या मतलब है? Just got crashed here. August 5 p.m. IST. This is the time my machine got crashed. Now crash का क्या मतलब है कि it can be recoverable, it could be recoverable. Maybe I am not an expert, I do not have those sufficient tools, but based on my past experience or something, I know कि ये machine recover हो सकती है, but I'll have to raise a ticket with Microsoft. Microsoft will send their engineer. मतलब 12 से 15 घंटे 24 घंटे लग सकते हैं इसमें, but this is, there are possibilities that it can be recovered. Okay, immediately मुझसे recover नहीं होने वाली है, but it is possible to recover, maybe with vendor help. Ignore the spelling mistakes guys. Okay, vendor help, vendor as in इस केस में Microsoft. Okay, vendor help के थ्रू ये मशीन रिकवरी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन कितना टाइम लगेगा इसमें? अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स लग सकते हैं, मिनिमम 24 आवर्स लग सकते हैं इसमें, और लेट्स से 8 आवर्स. 24 तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, माइक्रोसॉफ्ट डजंट टेक इतना टाइम नहीं लेता. 8 आवर्स, ठीक है, 8 आवर्स इसमें लग सकते हैं. इज इट क्लियर? यहाँ तक ये सिनेरियो क्लियर है? Yeah. नाउ व्हाट एम आई डूइंग हियर? I am replacing this machine. I am saying कि 8 hours तक तो मैं नहीं रुक सकता. So what am I doing? ये जो मेरा current state का machine है ना, ये वाला, इसको मैं replace कर रहा हूँ. किससे? इस वाले बैकअप से. इस बैकअप से मैं replace कर रहा हूँ इसको. तो इसके और इसके बीच में जो डेटा है 10:30 PM 21 अगस्त 10:30 PM से लेकर 22 अगस्त 5 PM, इसके बीच में भी तो डेटा सेव हुआ है ना. What about that data? If I replace this, मैं इसी को यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा. ये जो मशीन क्रैश हुई, अगर मैं इसी को एग्जैक्टली यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा, तो इसके बीच का जो ये डेटा है, ये कहाँ चला गया? लेट्स से कि 4 घंटे बाद माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि हाँ, उसका रिकवरी तो पॉसिबल था. इट इज सिंपली सिंपल टास्क, इसका रिकवरी पॉसिबल था. हेंस व्हाट माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इज डूइंग, बिफोर रिप्लेसिंग, ये जिस भी तरह का है, क्रैश है, जिस भी स्टेटस का है, इसका भी एक बैकअप फाइल यहाँ पर वो बना देता है, ताकि लेटर ऑन इफ यू वांट टू ट्रबल शूट ऑन दिस वन, यू कैन डू दैट. तो इसका एक बैकअप कॉपी बनाएगा एंड देन इसको नई कॉपी से रिप्लेस करेगा. इसका एक बैकअप पहले यहाँ पर बनाएगा, चाहे वो क्रैश था किसी भी तरह का, उसका बैकअप बनाएगा एंड देन इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देगा. इज इट क्लियर? Yeah, it's clear. इज इट, या स्टिल कोई कंफ्यूजन है? Yeah, like kind of clear. ये सिर्फ रिप्लेसमेंट में हो रहा है बैकअप, वो भी ऑटोमेटिकली हो रहा है. यस, रिप्लेसमेंट में ही होगा ना, क्योंकि न्यू में तो हम ऑलरेडी न्यू बना रहे, तो आपका एग्जिस्टिंग तो पड़ा ही है, तो व्हाई वुड यू रिक्वायर अ बैकअप? सो इट्स लेस देन 1 मिनट गाइस. ये हो जाएगा. यू गाइस कैन गो एंड चेक द वर्चुअल मशीन विल बी देयर एंड आई विल डिलीट दैट एंटायर सेटअप. मैं आज 1 घंटे के बाद सबको डिलीट कर दूंगा. ठीक है, आप लोग जाने के बाद ये कर सकते हो. व्हाट आई विल डू, अरबाज वाले इसमें हो रहा है ये सब कुछ, अरबाज वाले रिसोर्स ग्रुप में मैं आप सबको एक्सेस दे दूंगा. यू गाइस कैन गो एंड चेक वर्चुअल मशीन वगैरह एवरीथिंग. ठीक है, सी यू गाइस टुमारो. Tomorrow if you have any questions, we'll go ahead with backup, otherwise we'll start replication. If you have any questions, let me know. WhatsApp पे message कर देना, group में और individually. See you. Okay. Thank you.